Okay, now it got started. Start हो गया सर? जी 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 जी. Okay, sir. Thank you, sir. Hi, guys. Hello, everyone. I'm Srikant and welcome to Jatan Verma's IAS Academy. How are you guys? Okay. Yeah. Okay. So, guys, actually, there might be some issue with reference to light here, okay? Because in my area, the electricity has gone, okay? It's not here since morning. So please kindly adjust with this, okay? Now, guys, the objective of this particular session is basically with reference to the optional geography course that we are starting here at Jatan Verma's IAS Academy, okay? And today's topic is it's a kind of like a small introduction, okay? Small introduction with reference to the subject, right? So I'm expecting you guys to join in large numbers, right? Please join in large numbers so that we can take today's topic, okay? And I can discuss what are going to be the various different advantages that you people will have when you will join Jatan Verma's IAS Academy, okay? And this course of optional geography, okay? So guys, I'm expecting you people to join in large numbers. Kindly join. So who all have come, okay? Can I know the name of the students who are watching this session? Okay, surely not a problem. So guys, like I said, that this session is based on for your optional geography course, okay? And today the topic that we are going to take would be a topic on biogeography. Okay, now biogeography will be talking about some aspects of soil, right? What exactly a soil is, what are the different horizons, okay? What exactly you call soil profile as, right? So all these things will be taken with reference to the subject of biogeography, right? Now, first of all, if somebody asks, like, what exactly is the study, okay, or what exactly is the process of soil formation? So, we generally say that it is what? Can anyone please tell me in the comment section? What exactly do you call it? The process is pedogenesis. The soil formation process is called as pedogenesis. Now, students, one thing very important that we have to see is how actually a soil is formed. That's the entire topic, that's the entire idea that we have to take here. Now see, when I'm speaking with reference to formation of soil, I have to understand one thing very clearly, that soil formation is a tedious process and it's a very long process. The things, they don't happen in some years time, okay? It takes thousands and thousands of years for the formation of soil. Okay, now for example, if we have to study about how exactly or what exactly the profile of soil is, so we generally say that the vertical section, okay, a vertical section through the different layers of the soil, okay, for example, somewhat like this, okay, this is one layer, this is two layer, okay, this is third layer, this is the fourth layer, okay, somewhat like this. So when we take a thorough study of the vertical sections of the different layers of the soil, we call it as soil profile. Now generally, soil consists of how many layers? Soil consists of three layers, right? And they are the topsoil, the subsoil, and the bedrock. Okay. Now, for example, if you have to see the reference of soil, now here you can see that we have this particular region, this whole entire region. Okay.
Now this particular region can come under the category, like you have this particular layer here, then you have a layer here, you have this particular third layer, then you have the parent material, and at last you have the sorry, this is the bedrock region. Okay, this whole region is called as bedrock. Now what exactly are they? We'll be talking about all of them. Okay, and we'll be trying to understand what exactly is the aspect of all these layers, but before that we have to see a general understanding, right? So like I've told you, like we have seen in this particular photograph, that every soil has got a different color, they are present at different depth, and the chemical composition, that is the presence of different kind of nutrients or different kind of elements, is different in every layer. Okay, now what happens is, look guys, when I'm talking about the layers, so rather than using the term layers here, what we generally use in soil geography is we call them as horizon. Okay, so each layer of soil is termed as what? Each layer is termed as horizon. Okay, now how exactly these different horizons are formed? So one very important, one very simple thing that can be said with reference to the formation of horizons is that there are various processes that are actually happening internally. Now the idea can be like the capillary movements, the upward movements of material and water. Okay, for example, like we know that in water cycle, we all know that there are different processes that are present. Now, for example, when I'm talking about the water cycle, we know that you have at first evaporation, then you have the condensation, then you have the precipitation, at last you'll see percolation. So what happens in percolation? The water present on the ground is absorbed by the soil there. Okay, and from there the movement of water starts happening. Okay, beneath the layer, okay, beneath that particular layer. Now along with the water that is being absorbed, there are various different materials that too are absorbed by the soil, and the movement of all those material takes place along with the movement of the water, right? So we know that different horizons can have different composition of the minerals, okay, or the elements, and that solely depends upon a couple of things. For example, the nature of what exactly the material got weathered. Okay, the chemical composition of that, it might play a very important role in with reference to this particular thing of forming a chemical composition. Okay, just wait a sec guys, please come in, please come in. एक सेकंड एक सेकंड, गीजर का हमारा लोड थोड़ा सा नीचे बढ़ रहा है, मैं देखता हूँ। मैंने मीटिंग में है यार, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। Just wait a sec guys, please. Okay guys, I'm sorry. So now guys, like I said, that different materials, okay, so they actually are adding to the chemical composition there, right? So we have to see that how exactly this particular you can say this particular movement of materials, it actually adds to the mineral composition or not, right? So what we can say, that various processes like leaching, like the capillary movement, okay, or the upward movement of materials and waters takes place, and how exactly they contribute towards the nature of that particular layer of soil. Okay, so like I said guys, you have three basically. If you want to divide, you have a division very simple, that you can easily classify them as topsoil, subsoil, and the bedrock. Now bedrock is that particular region which actually was the source, okay, the parent material, right? It was the parent material. Now bedrock, basically, now above the bedrock layer you will find one more layer where you will have to see that the weathered parent material that actually came from the bedrock, right? So you have these three layers, and different characteristics are present. For example, we'll be talking about this. So guys, like I said, a soil horizon
is a layer generally parallel to the soil surface, okay, whose physical characteristics differ from the layers above and beneath. Okay, now like I said that every horizon, that is every layer, has got different physical features, they have different colors, they have different texture, they have different chemical composition. Okay, now for example here you can see the uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. Now what we say with reference to the topmost layer, the uppermost horizon, we say that it is rich in humus, number one, and then we say that it is also rich in minerals. Okay, now because of the presence of the humus, it because of that particular humus, the soil receives its fertility. And with reference to fertility, what do I mean? That the soil has got those required nutrients which are actually responsible for the growth of a plant, right? So what happens when all those minerals are present because of the humus that are actually making the soil fertile, all those nutrients are received by the plant, and ultimately we see that there is a growth in plant because the plant is receiving the sufficient amount of nutrition which it requires. Okay, now this general is this layer, this horizon, this layer is generally soft, it is porous, and it can retain more water. That means the water storing capacity, the water retention ability of the soil here is very high. Okay, now this particular region, okay, where agriculture is performed, it is called as the topsoil or the A horizon. Okay, now going to the second layer or the second horizon, see, we receive humus from lot many things. Okay, we receive humus from the wastes of animals, presence of different insects which are present in the soil. Okay, various other wastes such as leaves, etc., right? All these things, all these factors, they actually add to the fertility of the soil. But all these things can be received only at the top horizon, not in the horizon beneath it. So that's exactly brings us to our second horizon or the middle layer, where we see the next layer has got a lesser amount of humus but more of minerals. See, presence of minerals, absolutely there is large. Okay, now, this layer is generally harder and more compact, and it is called as B horizon or the middle layer. See, students, when I said when the process of percolation starts happening, okay, now with reference to percolation, when the percolation is happening, the percolation means movement of water or absorption of water by the soil, okay. Now, along with the soil, various minerals are also absorbed. This water which is being absorbed by the soil, it actually goes down. It crosses the territory of topsoil, and it further enters into the B horizon. That's why you can say that the presence of minerals is more here. Okay, the presence of minerals is more here, which is actually because of the water that is moving downwards. Now the third layer is what you call as the C horizon. It is made up of small lump of rocks with crack. So here we are talking about the third layer, that is, we are talking about the weathered particles, weathered rock parent material, and also we are talking about the different parent materials or the bedrock which is present beneath it. So what we generally say, small lumps of rocks, they have got tremendous cracks in them. Fine. Now, various different components, okay? What are the various different components with reference to a particular soil profile? See, a soil horizon makes up डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल। लाइक आई सेड, मैंने जैसा आपको बताया आप लोगों को कि भाई हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लेयर्स अलग अलग कलर्स के हैं, ठीक है, तो होराइजन का हम लोगों ने नाम दे करके रखा हुआ है। द होराइजन रन्स रफली पैरेलल टू सॉइल सरफेस and has different properties and characteristics than the adjacent layer above and below. See, एक पर्टिकुलर होराइजन के ऊपर या एक पर्टिकुलर होराइजन के नीचे, यानी कि एक लेयर के ऊपर या एक लेयर के नीचे जो भी आपको सॉइल मिलेगी, इट इज नॉट मैंडेटरी कि सारी की सारी जो फीचर्स हैं दोनों सॉइल्स के वो सेम हैं। ओके, वो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। द सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल लाइक आई सेड ना, समवॉट लाइक दिस, ये वर्टिकल सेक्शन है हमारा, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको दिखा सकता हूँ। सी, दिस इज द क्लासिफिकेशन, कुछ इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है ये सॉइल प्रोफाइल हम लोगों ने बना करके रखा हुआ है। ओके, चलिए। So the soil profile is a vertical section of the soil
दैट डिपिक्ट्स ऑल ऑफ इट्स होराइजंस। और ये देखिए कहां से शुरू होता है, सॉइल सरफेस मतलब जो वो सबसे ऊपर का लेयर है वहां से स्टार्ट होकर के पैरेंट रॉक मटेरियल, ओके, जहां से शुरुआत हुई है उस पर्टिकुलर सॉइल के बनने की। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करके रखा हुआ है कैसे, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने एक हिस्से को हम लोगों ने बोला है रेगोलिथ। नाउ दिस पर्टिकुलर रीजन मतलब टॉप से लेकर के अप टिल पार्शली ऑल्टर्ड वेदरिंग मटेरियल, मतलब जो वेदर्ड, आपका वेदर्ड पेरेंट मटेरियल है, ये यहां तक, मतलब ये रहा आपका टॉप सॉइल का रीजन यहां से, और ये रहा आपका इधर, कुछ देख सकते हैं आप, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन तक हमारे पास, इस पर्टिकुलर रीजन तक हमारे पास क्या है बेटा, इस पर्टिकुलर रीजन तक का हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है रेगोलिथ। ठीक है, अब रेगोलिथ के भी अपने दो फॉर्म्स होते हैं, ओके, दो कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट यू कॉल एज द सोलम, and the second one is what you call as the saprolite। ये ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले कॉलम को हम लोगों ने बोला है सोलम और दूसरे कॉलम को हम लोगों ने नाम दिया है सैप्रोलाइट। अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सो सोलम बेसिकली ऊपर के जो रीजन्स हैं, ओके, ऊपर के जो रीजन्स हैं, जो जहां पर सबसे ज्यादा वेदर्ड मतलब अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, जब जैसे जैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट होराइजन से आप जाना शुरू करेंगे, द अमाउंट ऑफ वेदर्ड पार्टिकल, उसका जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा। सो जो फाइनर, जो सबसे ज्यादा वेदर्ड होराइजन का पोर्शन है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सॉइल के प्रोफाइल में, वो आपको दिखाई देगा यहां पर अंडर द टेरिटरी ऑफ सोलम। वहीं अगर सैप्रोलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सैप्रोलाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सैप्रोलाइट का जो रीजन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन, मतलब आप यहां पे देखो, मैं आपको बता देता हूं, ये आप यहां पे देख रहे हैं, यहां से लेकर के ये टॉप सॉइल की टेरिटरी से लेकर के अगर आप देखें तो ये यहां इतना रीजन जो है, ये इस पर्टिकुलर रीजन को मैंने नाम दिया है आपका किस चीज का, इस पर्टिकुलर रीजन को मैंने नाम दिया है आपका सोलम, SOLUM, सोलम। ओके, अब यहां से लेकर के मतलब जहां से ऑल्टर्ड मतलब लेस, ओके, कम वेदर्ड पार्टिकल जो है यहां तक का, तो ये जो है आपका, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है सैप्रोलाइट। तो आप ध्यान रखिएगा, रेगोलिथ के दो हिस्से, रेगोलिथ के दो हिस्से, उसमें से जो पहला हिस्सा है जिसका नाम है सोलम, इट कवर्स दैट पर्टिकुलर होराइजन जहां पर वेदरिंग जो है वो बहुत ज्यादा वेदर्ड पार्टिकल आपको मिलेंगे। जहां पर सोलम खत्म होता है वहां से लेकर के अप टिल द स्टार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ बेडरॉक, जो एक रीजन प्रेजेंट होता है जहां पर आपको वेदर्ड पार्टिकल मिलेगा, यू विल फाइंड द वेदर्ड पार्टिकल, बट द अमाउंट ऑफ वेदर्ड पार्टिकल, या फिर यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका सब्सटेंस है बेडरॉक, बिल्कुल भी यहां पर वेदरिंग हम लोग जो देख रहे हैं वो बहुत कम, उसके ऊपर का द वेदरिंग कंटेंट इज प्रेजेंट, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द पार्शियली ऑल्टर्ड पेरेंट मटेरियल, ओके। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेदरिंग जो है वो धीरे धीरे जो फाइनल पार्टिकल्स हैं वो हम लोगों को दिखाई देते हैं। सो more final particle they will come under the territory of solemn, the less altered parent material जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोगों को दिखाई देगा अंडर द कैटेगरी ऑफ सैप्रोलाइट, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो सबसे नीचे का डोमेन है, जो सबसे नीचे का रीजन है, वी कॉल दैट रीजन एज व्हाट, वी कॉल इट एज बेडरॉक। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए, ओके, तो मैंने आपको बताया द सैप्रोलाइट इज द लीस्ट वेदर्ड पोर्शन दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सॉलिड कंसोलिडेटेड बेडरॉक बट बीनीथ द रेगोलिथ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेगोलिथ के नीचे वाला जो हिस्सा आता है वो आता है आपका बेडरॉक की कैटेगरी में। तो स्टूडेंट्स यही आपका एस्पेक्ट है, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। अब जैसे यहाँ पर आप देख ले सकते हैं द टॉप होराइजन, ये जो सबसे ऊपर जो होराइजन आपको दिखाई दे रहा है, ओके, यहां पर ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये सबसे ऊपर का हिस्सा, नाउ दिस पर्टिकुलर रीजन इज बेसिकली व्हाट यू कॉल एज द ओ होराइजन। और ओ होराइजन का मतलब यहां पर क्या हो गया, बेसिकली ओ कैन बी रेफर्ड टू द ऑर्गेनिक, ओके, ऑर्गेनिक मैटर।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई पार्टली जो डीके हुआ ऑर्गेनिक मैटर वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फॉलोड बाय ये यहाँ से देखिए इस पर्टिकुलर रीजन से, इस पर्टिकुलर रीजन से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है क्या, यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है ए होराइजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ए होराइजन, दिस इज अनदर लेयर। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिनरल मैटर, बेसिकली जो मिनरल कंटेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा ह्यूमस भी आपके साथ, ओके, ह्यूमस भी आपके साथ प्रेजेंट होगा। फॉलोड बाय दैट यू हैव द ई होराइजन। Now, this region, okay, this region in white, it embarks what? It embarks it as a zone of leaching, okay, zone of leaching. यहाँ पे मतलब leaching जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। मैंने बताया था ना फैक्टर्स, काफी सारे फैक्टर्स हैं, तो उनमें से एक फैक्टर लीचिंग भी है। सो लीचिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आफ्टर द ई होराइजन इट इज द बी होराइजन। ओके, देखिए सबका सबका रेफरेंस बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। एलुविएशन अगर हम लोग बोलें या फिर हम लोग लीचिंग बोलें तो वो ई होराइजन। अब बी होराइजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जितना भी आपका आयरन कंटेंट हो गया, आपका अल्यूमिनियम कंटेंट हो गया, रेस्ट ऑफ द मिनरल्स हो गए, वो सारे के सारे आपको कहाँ पे होंगे डिपॉजिटेड, वो आपके इस पर्टिकुलर टेरिटरी में जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बी होराइजन। ठीक इसके बाद अब हमारे पास आता है द पार्टली ऑल्टर्ड पैरेंट मटेरियल। ओके, पार्टली ऑल्टर्ड पैरेंट मटेरियल मतलब जो बेडरॉक है, बेडरॉक की ही प्रॉपर्टी पोज करता हुआ आपके पास ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इट पोजेस ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेडरॉक। ठीक है, ये वेदर्ड ये यहाँ पे आपको वेदर्ड सब्सटेंस आपको दिखाई दे जाएगा, राइट। एंड लास्ट में आता है आपके आर होराइजन, यानी कि अनवेदर्ड पैरेंट मटेरियल, या जिसको आप लोग एक और नाम से बुला सकते हैं बेड रॉक। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली फॉर्मेशन कैसे, हाउ एग्जैक्टली द सॉइल इज फॉर्म्ड, क्या क्या प्रोसेसेस हम लोगों को देखने पड़ते हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। ओके, बट यहाँ पे ये एक जनरल आइडिया, एक जनरल इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड टू यू गाइस, ओके, through this particular session, right? So guys, this was a small interaction with you people. I hope you like this session, okay, and I hope you guys definitely try to enroll yourself in the optional geography program of Jitin Verma's IAS Academy. See students, there are going to be a lot many benefits associated with this program. Okay, now we will be providing you sessions both online and offline way. Okay, proper PDF notes will be provided, proper guidance will be there, there would be proper mentoring, okay, and you will receive mentoring from some of the best faculties, okay. Also, the course is going to be bilingual, that is, it will be both English and Hindi. However, like I'll be very frank with you guys, it'll be almost 70 to 75% English and 30 to 25, like 25 to 30% of Hindi, right? Because answer writing generally that you'll be making, so with reference to that, and also like the faculties are always available, okay, you will get a proper environment, like how exactly you have to begin your preparation, what all strategies that you have to follow, okay, each and every aspect will be covered in this particular course that we are going to start. Okay, so guys, please, you can call our counselors, you will have, okay, you can definitely call all our counselors, okay, and whatever queries you have, just ask them, and I'm expecting you guys to join in large numbers. Okay, so guys, this was Srikant Tripathi. Okay, bye bye, take care, I hope you enjoyed the session, right, and kindly please do subscribe and like the video. Thank you very much guys, bye bye.